जय जगन्नाथ शुभ संध्या समस्त को नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदनं सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्वचराचरर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत। New thoughts, new vision. 2023 137th national level live webinar organized by Rover Ranger Unit of Maharishi College of Natural Law. A warm welcome to all of you, the viewers. Wish you a very good happy new year to all of you. Let's welcome virtually giving salute to our guest as Dr. Sri Jagadananda with us. I request all of you be attention and salute. जैसे थे respected Principal Dr. N.P. Mahapatra, the President of this webinar, esteemed Dr. K.P.M. Misra, the Vice President, Bharat Scouts and Guide, New Delhi, and State Chief Commissioner, Odisha State Bharat Scouts and Guide, Reverend Sri Jagadananda sir, the former State Information Commissioner and mentor, co-founder of Center for Youth and Social Development, the former member of Niti Aayog and mentor of many social activists of our state, the chief speaker who joined over here, Miss PRATIVA Mahapatra, the DOC guide JHARSUGUDA, and the teacher OPM Government Girls High School, Brajaraj Nagar, dear DIBYANSHU PADHI, DB School, MCNL, JHARSUGUDA, dear ANSUMAN SAHOO, all the members of webinar team, respected media people, all the teachers, students, professors, lecturers, and volunteers from different corner of our country, and my dear colleagues of Maharishi College of Natural Law. It's really pleasure for me to introduce our guest today, who is nothing but our mentor, we can say, and a great revolutionary person in Odisha and in particular, but in general, a member of social activists in India. Prior to that, I'd like to request DIBYANSHU PADHI to welcome sir with the slogan. And that is a very small slogan for sir. He always say, my life is my message. So that is the slogan for all of us. Now I request DIBYANSHU PADHI, a small boy of 8 years old. He will enchant the SLOKA, and then I'll introduce sir and will virtually welcome sir, and then we'll start the program. Now I request DIBYANSHU PADHI. Are you there? DIBYANSHU PADHI? Just a minute. Prior to that, let us welcome our sir virtually so that till
Okay. Till Dibyanshu join, I'll just introduce sir. I have no words to introduce him because he is my mentor. So I have my exalted pleasure to introduce the great social activist, the pioneer of Suchana Adhikara in 2019, a practical portion, a renowned social worker to whom you find in different TV channel suggestions, giving suggestions and ideas to the government, to the public as well. The name Jagadananda is very famous in the field of social debate, who always open to any group of intellectual mass. He set an enviable reputation as a social activist in the country. He has glorified not only himself but the youth community through his thought, word, and deeds. He always stands as a support and backbone to all the volunteers and those who work properly, precisely, and dedicated for a social change. Irrespective of class, creed, religion, his advice, continuous support, and fruitful guidance that develop many social workers to dedicate themselves in the country to be an agent for the change in the society in a disciplined way. His lectures in different PG, MPhil, orientation, and refresher courses stimulated the participants like lecturers, professors, and encouraged them to spare their valuable time for the social upliftment. So nothing more to say. Today's title of our webinar, as you all very fine, very acquainted with this word, but what he said is something different. When I welcome him in the morning saying, "Sir, Happy New Year," he said, "What is the new thought today?" I said, "Sir, we want to listen from you that thought, and we want with that thought we'll just achieve our goal and we'll join or we'll overcome the new horizon." So today's topic is new thoughts and new horizon for the new year 2023. So before listen from him, I would like to request Dibyanshu. Are you there, please? Dibyanshu Padi. Okay. Now, Jugal sir. Okay. Now I request Anshuman. Anshuman Shahu. Anshuman Sahu. Anshuman Sahu. Did you listen to me? Sweetie. Dibyanshu, please start. We are already late. You please start. Unmute your video. Unmute your video. Namaskar. I am Dibyanshu Padi from class 4 DAB Public School Bandawal. Today I am going to chant Jana Tastakam and also Happy New Year to everyone. Okay. Unmute your video. We are not able to see you. Yes. Oh, Start. Just Kadachit Kalandi Tata Vipina Sangita Karabo Muda Bhiri Nari Badana Kamala Swada Madhupa Rama Shambhu Brahma Marapati Ganesharchita Pado Jagannatha Swami Nayana Pathagami Bhavatume Buje Sabhe Benu Sirasi Siki Pincham Katitate Dukulam Netrante Sahajara Kataksham Vidadate Sada Srimad Vrindavana Basati Leela Parichayo
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसे बाबशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Thank you. Unmute karo Namita. Now I request Jagadananda Sarji to enlighten us about new thoughts and new horizon in 2023. Sir. Thank you. Thank you. Let me compliment all of you, especially Dr. Namita and the entire team who has assembled today to be part of an interactive dialogue. It's going to be an interactive dialogue. I'm not going to do a monologue actually. Yes, sir. But how do we do? Why are we here today? I think we are a different lot altogether, right? There will be many who will be spending time in their, in the hotels, in the Picnic. clubs, in the bars, to do the merry-go-round on the eve of the new year. But we are a different lot because we have assembled here together to think, what can we do for the society? Yes. What is the need of the society in the new year? What are the issues before us? What can be done? What I can do, Yes. right, for the society rather than what the society can do for me. So therefore, let me compliment each one of you. Let me congratulate each one of you. Let me thank you all for finding the time to come, especially on a New Year Eve, in a very sweet call given by Dr. Namita Pattanaik, right? Namita, is a flower actually. She always tries to what you call spread the fragrance of the flower to others so that you can get into a flock, and that is the evening flock today. Congratulations. Thank you, sir. Today in the society, we have two lots. One set of people are a lot who only think about themselves, who think about their own family, who think about their own children, who think about their own relatives, and they think about their own money, and they also die with their own money, with their own biradari, and that's it. That is their life actually. That is one set of people. There is another set of people who on a daily basis, on an hourly basis, thinking about the society actually. What can they do for the society? What are the problems of the society? What are the issues before the society? So that is the second lot. And with confidence, I can say we belong to the second lot actually. We are not thinking about our family. We are not that, not that we are not thinking about our children. We do think about our children, we do think about our family, but we also think about the society actually. We are not self-centered, we are societal-centered. So therefore, congratulations, and congratulations for really thinking about the society. And you belong to only 20% of the entire population, let me tell you. So let us congratulate each other on the eve of the new year that we are a minority, we are a small lot, but we are thinking how a society can be little better during our time. The third aspect I would like to share with you, you see, like as I said,
There are again two types of citizens. One set of citizens are whom I call passive citizens. Passive citizenship is what? They only think about themselves. They will not get involved in any societal affairs. And when everything is complete, they will criticize. They will say, ये एमती इतने भला ही था, ये ऐसे होने से बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन हुआ नहीं. उस टाइम खत्म हो गया काम. Right? By that time, the work is over. There is another set of people whom I call active citizens, who are day and night thinking how the world can be little better, because we are currently in an era that is sustainable development goals era, where there is a total consensus, total commitment around the world, how world is going to look like in the year 2030, and that is 2030 agenda. So 2030 agenda is our agenda. 2030 agenda is a societal agenda. 2030 agenda is a global agenda. And what is 2030 agenda? 2030 agenda is talking about how we want to see our people, how we want to see our planet, what is the kind of prosperity we want to have, so that there is a minimal difference between the rich and the poor. What is the kind of peace we should embrace so that there is less violence in the society? And what is the kind of partnership we need to build between the government, civil society, between the corporate sector and the government, between the academic world and the societal world, between the college and the village, and the university and the community. So that is a kind of framework which is already available before us, and we are going through this. But the beauty of this Sustainable Development Goals agenda is, Agenda 2030, no one should be left behind. Not a single person should be left behind in the year 2030. Are we doing enough to make it happen? It's a lifetime opportunity. So today, in a new year, the first commitment we need to make ourselves is, how do I align myself? How do I realign myself with the Sustainable Development Goals and be part of a societal watchdog, so that no one leave or no one left behind, the slogan is converted to a real action. That is the first commitment we need to make to ourselves. Actually, how do I realign myself with the Sustainable Development Goals, which is a global agenda, which is an agenda which is futuristic, which is an agenda in which governments, United Nations, private sector, corporate sector, academic world, civil society, absolutely they have agreed. There is a consensus. At no point of time in the history such a consensus was possible. And there is a commitment to do something actually. Niti Aayog is comparing every state, how we are doing actually in terms of SDG realization. Within Odisha, there is a SDG cell in the Planning Convergence Department. They are working on how our districts are doing, and within every district, now they are thinking how their blocks are doing, how their panchayats are doing. So when there is such a massive action taking place, right? Rovers, Rangers, Scouts, Guides, NSS, NCC, all the youth force, we need to really come together and really be part of the SDG agenda. So that is our first commitment. And the second and last one, let me tell you, to do that, it's not easy actually. And many of us, we are all tired actually. Because it's a small minority, only 20%, so the whole societal load comes on you. Because now Bhubaneswar is gearing up for the World Cup. The city is getting beautified so that the guests, when they come from around the world, they see a different city. It's a proud moment for all of us. There is a lot of work. This Bhubaneswar Municipal Corporation has started Shramdan camp in a big way so that the sanitation drive has become a reality. Today, I have advised the BMC authorities through a press note requesting them to involve the community at large, to involve the people at large,
to involve the youth force at large, so that this Ramadan movement for a huge sanitation drive becomes a people's movement. It's not a Bhubaneswar Municipal Corporation movement, it's a people's movement. And I'm sure many of you are involved in that. Many of you will be involved in that. And the second, the third challenge is, it's just not Bhubaneswar. Imagine if we are able to do a JHARSUGUDA Shramdan movement. Imagine if we do a Shramdan movement in Bargarh, if we do a Shramdan movement in Balasore, every district will become little different. Every city will become different. Every state will become different, when which large number of people come and participate in their own city beautification program. And finally, to do that, you need confidence, you need courage, and you need strength and stamina, actually. Strength and stamina. So to do that, my request to all of you during the new year would be, you have to schedule a regular meeting with yourself. You have to schedule a regular meeting with yourself. How do we do that? That is the message I want to leave for your consideration. Friends, as we continue to venture into uncharted economic waters now, with the new COVID pandemic again reorganizing itself, now in China, Korea, Japan, a lot of Western countries are now getting affected, and we are not far behind. What is going to happen, we do not know. We should not be scared also, but there is an uncertainty right now. When we venture into this uncertainty world, and at the same time, can we keep our job on track and deliver our best, actually? So therefore, if we want to do that, please schedule a weekly meeting with yourself. That is right. No matter how busy you are, this is not a luxury. This is essential, actually. We don't talk to ourselves. We don't reflect. So in a new year, I would like every week, you take a quiet hour. Give an hour to yourself in a week. Right? 1 hour every week to reflect on the critical events which has taken shape during the week itself. The conflicts in your mind, conflicts outside, your own failures and failure of many things outside, opportunities which you exploited, you liked and you tried, your observations of others' behavior, the feedback which you received from others. Consider how you responded to that, what went well, what did not go well, and what might be more effective in the future, actually. And my last request and appeal is, never cancel this meeting. We can cancel the webinar, which Namita very kindly has pulled together, right? But never cancel this weekly meeting, which you should do with yourself, actually. And that is the need of the hour. And once you start doing it, you learn the art of both your positive and negative side. You become more reflective. And once you become reflective, you become more matured. And what is maturity, actually? Maturity is nothing. Maturity is a young boy, like we saw PADHI singing a beautiful, recital. I think he's matured at the age in which he's pursuing his 4th standard. And many of us who have completed our lifetime may not be matured, actually. So what is maturity? Maturity is all about being aware about your own strength and your own weaknesses. That is maturity. More you are aware, more you are matured. Less you are aware about your strength and your weaknesses, less you are matured. So I want in the new year, each one of us become more matured, actually, more credible, more reflective. And that can only happen if we all become reflective. We start thinking about our own behavior, our own response to various things happening outside. And that can only happen if you have this weekly meeting with yourself.
1 hour every week, a meeting with yourself. This meeting is very important. As I said, I repeat, never cancel this meeting. This is so essential. This is so critical. It's not a luxury, it's a necessity. With these words, let me thank you and wish you a wonderful year, wish you a lovely time. And I want each one of you, and through you, the society becomes more matured so that there are more active citizens joining you, and our 20% becomes 40% maybe in a year. Thank you so much, Namita. Thank you. Thank you, sir. Now I request, there are friends from Bihar, Sonu Kumar ji. If you have any question, you can interact with sir. मैम, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर के द्वारा समझ में आया ना कुछ? जी 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 सर, आपकी बातें बहुत अच्छी पॉइंट्स तो दिए, मैं समझ ही गया हूँ। बट हमारी तरफ कुछ नेटवर्क की समस्याएं थी, और इस वजह से मैं बाहर भी हो गया था। और मैं बाद में रिकॉर्डिंग तो दीदी भेज ही देती हैं, तो मैं सुन भी लूंगा बाद में। बट सर, आपने जो पॉइंट्स आपने बताए नए साल पे, आपने जो बातें बताई बहुत ही जबरदस्त, कम शब्दों में आपने बहुत कुछ सर कह दिया, बहुत सवालों का जवाब आपने दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहिए। मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ सर। थैंक यू सोनू। May I request, we are friends from Shanu Kumar ji, Asama, Mihir Kumar, Madhushmita, Lala Anant Kumar ji, the advocate from Puri. Yes, do you have any interaction? Yes, Lala ji. नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर समस्त को। जय जगन्नाथ। आज किंतु बहुत सुंदर भाव सर बुझेले अल्प समय भितर। आपनकर कथा कहंतु, आपन कोन कोन काम करछन एवं आपन सार को कोन आशा रखिछन्ते, कोन प्रकार रे आपन एडवाइस चाहछन्ते आपन को दिगरे जिबा पई, आपन विषय रे टिके कहि दियंतु, आपन ऑर्गेनाइजेशन विषय रे। नहीं, आज का दिन में मु भाबे जो संपर्क हो बा जे कोन जिंस हो, जो कोऑर्डिनेशन निया दरकार। प्रथम रिलेशन प्रथम फास्ट जिंस आपनकर जिंस होची फोन मेसेज गुड मॉर्निंग गुड नाइट बदल जदि आम प्रत्येक दिन टिके न पचार फोन में कथा ही बाबा केमती अच्छी, भाई केमती दादा केमती अच्छी, तार संपर्क बहुत बढ़िया भाव बढ़ो। आजिका दिन में लोक पाखे बसले भी फोन हाल हाई चलते, किंतु आजिका दिन कौन प्रकार संपर्क तांकर ना रही पारु नाही, माने सीधा सीधा भाव सब फोन माध्यम चलुची। जदि काका बस दादा बस भी लोक फोन में कथा होती, टिके जदि जदि फोन आलोचना माने गुड मॉर्निंग गुड नाइट जगह आप चैट बदला जदि टिके फोन में भी कथा डायरेक्ट होते, तेबे मनर भाव जानी पारती। कारण किसी लोक मरी भी जाऊँ, लोक आजकल जानी पारना, पिला यंग बयस हो अजल जानी पारना, देह सीरियस भी लोक जानी पारना। मैंने समझा देता हूँ सोनू को। सोनू, लाला अनंत जी ने ये बता रहे थे, आज के जमाने में हम लोग ज्यादा डिजिटली कनेक्टेड हो रहे हैं, पर्सनल कनेक्शन खत्म हो रहा है और बातचीत कम हो रहा है। ज्यादा हेलो गुड मॉर्निंग हाई यही भी इसी में रह जाता है, और ये सारा ये जो डिजिटल वर्ल्ड की एक नया प्रक्रिया शुरू हुआ है उसमें पर्सनल टच कम हो रहा है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा पर्सनल टच बढ़े। थैंक यू। नमिता मुकिची कहली अधिकार कह देली की नहीं सर, बहुत बढ़िया लगुची, सत्य की दरकार सर। क्योंकि आज के मैं देख रहा हूँ बहुत घर में क्या होता है, बहू पिला आ गए ना, बहू पिला दादाजी के साथ बात करने नहीं देते। वो बोलते हैं दादाजी बात खराब कर देंगे। क्यों खराब कर देंगे? आप थोड़ा बहुत उनका साथ बात करेंगे फोन में, तो बात चैटिंग अच्छा रहेगा, बात का थैंक यू लाला। Now we are having, you can all add actually what I said. You can also add your thoughts. Yes. In a new year. Today, is a very good time we are getting together. You Sir. can also add 1-2 points, one more point, anything you like. It can work actually. सर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रियंवदा सामल फ्रॉम मुंबई। मैडम, मैडम आर यू देयर? यस मैडम नमस्ते।
मैडम नमस्कार बहुत सुंदर पोएम सार लिखिछंती बहुत सुंदर पोएम सब बेले लिखंती विभिन्न कविता माध्यम रे तांकर मनर भाषा से परिप्रकाश करंती तो मैडम आज यदि आपण पाखरे गोटे छोट कविता अछि आपण पढंतु भल लागिवो सुनिबा पई आगे नववर्ष विषय गोटे पेपर भी बाहर प्रमाद पेपर रे ताको आवृत्ति आगे मैडम मैडम वीडियोटा अनम्यूट करिवे मैडम सेटा ओके ओके हो ठीक रही जाइसी आपनकर फोन रे ओके अच्छा अच्छा फोन देखि कोचन कोंतु मैडम कोंतु आगे गोटे मिनिट परे परे रश्मि रेखा सामंतराय मैडम पुरी रु गेट रेडी स्वागत कर गीति नवा वर्ष पई शिशिर स्नात स्निग्ध रजनी रे शिशिर स्नात स्निग्ध रजनी रे आगत नववर्ष दिव्य आलोकर भव्य आनंद रे विच्छुरित कर हर्ष रजनी गंधारा शुभ्रता को नहीं रजनी गंधारा शुभ्रता को नहीं पवित्र कर मन गंगा शिउड़ीर भुरु भुरु आसे पूर्ण कर दिव्य प्राण स्नेह शांति मैत्री प्रीतिर रंगरे स्नेह शांति मैत्री प्रीतिर रंगरे रंगीन करे धरा रोग शोक ईर्षा हिंसा दूर कर सेवा गुणे मन तोरा नूतन प्रगति नव आशा जागु नूतन प्रगति नव आशा जागु दिव्य स्पर्श नव गीति उन्नतिर पथे अग्रसर हेउ प्रतिटी मानव जाति नव प्रभातरे नव नव कड़ी नव प्रभातरे नव नव कड़ी सुबासिता गुण भरी नूतन प्रतिभा प्रतिभु पराए मोहकांतु गिरिधारी धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच बरीरु वंदना मैडम अछंती सा से बहुत कार्यक्रम करिसंती तांको लाइफ रे मो अनुरोध करिवि वंदना मैडम आपणकर आजिर अनुचिंता दुई पदरे कहंतु अनम्यूट कर दियंतु अनम्यूट करंतु निजको प्रेमदा मैडम आपण जो फोन रो मझी चित्रटा को टच कर दियंतु पुओ नाही पाखरे पुओ नाही महर्षि महाविद्यालय रो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आज आम गहन रे जोग दैछंती डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र मैडम को अनुरोध करिवे मैडम
जगदानंद सर हम पाखरे अछंती सर तांकर इंटरेक्शन रे बहुत किछि कथा कहिले आपणकर अनुपस्थित रे हमको बहुत मन दुख होतिला आपण हेलो। जोग दैछंती द्विपद कुहंतु मैडम हमारी आवाज नमस्कार आ रही आज्ञा दीदी? नमस्कार आज्ञा आजिकार वेबिनार रे उपस्थित थिबा समस्त अतिथि को मु स्वागत करूची एई कोन के रविवार गोटे छुट्टी जाऊ मिली मते आउ एक रे नुआ वर्ष थकी जाइची आउ नमिता मैडम को अनुरोध रक्षा न करी पारी मु जॉइन कली आउ मोर के मते किछि खराब भाबिबेनी आउ ए जो बिजी सीजी भितरे आउ आज गोटे दिन नुआ वर्ष रे टिके बहुत बिजी थिली जाऊ आपण मान को मु मिस करूथिली आउ नूतन वर्ष समस्तंग पई आशा उद्दीपनार वर्ष हेउ समस्तंगर मंगलमय जगन्नाथ समस्तंगर मंगल करंतो आज मु सुनी न पारिथिबारु आपणकर उद्बोधन बहुत दुखित आउ नमिता मैडम तो तांकर प्रचेष्टा रे सब बेले जागृत अछंती जागरण अछंती आउ मोर से यंग अछंती पारुचंती मुदा रिटायर्ड पकड़लाणी जाऊ तांकर सहयोगी माननकु मु स्वागत करूची आ नूतन वर्षर अभिनंदन जणाउची आजिकार टॉपिक बोधे थिला कोन थॉट यंग थॉट ना कोन आपण रखतिले मोर तो मन पडुनी मैडम न्यू आज रो थिला न्यू थॉट्स न्यू होराइजन थॉट्स बहुत बढ़िया चैप्टर टीए बहुत बढ़िया टॉपिक सब बेले आमे नूतन को स्वागत करिबा आ पुरातन र पीढ़ी उपरे आ नूतन ही प्रतिष्ठित हुए आ पुरातन को तो आमे छाड़ी परिबानी कि पुराना उपरे नुआ पीढ़ी चलिबे किंतु नुआ पीढ़ी नुआ चिंता नुआ चित्त चेतना रे से माने जागृत हुंतो मु सबु मोर छात्र छात्री को और जो माने सहकर्मी अछंती से मानन को कहूची एटा गोटे भलो टॉपिक एवं ए टॉपिक र विशेषत्व समस्ते बुझंतो जे न्यू थॉट्स नुआ नुआ चिंता धारा भितरे आमे जदि न चलीबा ताले आमे पछरे पड़ी जिबा मु एती कहूची आ समस्त को धन्यवाद दउची थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच वर्तमान अनुरोध करी प्रतिभा मैडम आपण ए कार्यक्रम शेष रे धन्यवाद देवार जो कार्यक्रम रही निश्चित भाव में धन्यवाद देबे मु जानी आपण जॉइन करि पार नथिले झारसुगुडारू 2-3 थर ट्राई करथिले नेटवर्क प्रॉब्लम जगु सारंकर आजिर जो कार्यक्रम रे हमको जो सजेशन थिला तार 3टी वक्तव्य मु आपण माने समस्त जानिबा पई खाली आउथरे पुनरावृत्ति करिया को चाहिबी एसडीजी गोल उपरे आमे समस्त जानिबा दरकार एवं केही जेपरी एसडीजी गोल भितरु बाहर को न रुहंतु अर्थात समस्त केवल अवेयर हेबे ता नुहे निजको शामिल करिवे से विषय रे सर हमको सम्यक चिंताधारा दैछंती आमे से चिंताधारा को आहुरी आगु को आगामी दिन रे अधिक जानिबा एवं प्रत्येक दिन निज पई गोटे घंटा दबा से गोटे वीक रे गोटे घंटा जदि आमे निजे चिंता करिबा आमे कोन कोन हैपेंस कोन क्रिटिकल जिंसो हेई सारिची बा सेथिरे हमर रोल कोन रहिबो एवं सोसाइटी रे किछि परिवर्तन आनिबा पई आमे कोन करिबा तार पई फीडबैक दबा एवं आम निजर वीकनेस एवं स्ट्रेंथ गुडी को आमे जानिबा एवं से गुडी को मध्य किपरि भाबरे आगु को बढ़िबा पई कि वीकनेस को मध्य आमे स्ट्रेंथ रे परिणत करिबा ता छडा अनेक तो किछि कहिचंदी ता भितर सबुटु बड़ जिंस जोटा जहा को भलो लागिला एई जिंसटा जो सर कहले आ सेटा बहुत भलो लागिला जी आजिर चिंताधारा रे निज पई किछि उडे परिवर्तन आनिबा पई चाहूची तेबे से निजर वीकनेस टा को कन्वर्ट करू स्ट्रेंथ रे ताले से होबो आगामी दिन पई गोटे बड़ निजर चिंताधारा आउ एई सब विषय रे हमें जानिबा बेतरे मोर गोटे अनुरोध रहिबो जो माने आम संगे आज शामिल रहिचंती आमे आगामी दिन रे गोटे नुआ टॉपिक रखिबा को जाउचे आज एठी बसी चिंता करूथिली विफलता पई निजको दायी करिबा एवं सफलता पई अन्य को श्रेय दबा ए हो आगामी दिन रो वेबिनार रो टॉपिक
जो थे आपण माने निजे किछि होमवर्क करके आसीबे एवं आपण माने समस्त इंटरेक्शन करिवे ये गोटे एपरी प्लेटफॉर्म जोठी आमे घरे बसी समस्त निज निजर चिंताधारा को शेयर करछे आ समस्त जदी एलुफ रहिबा भलो लागिबनी आनुष्ठानिक भाबे रे आमे वेबिनार करूचे ठीक अछि कि आगामी दिन रे समस्त निज निजर मत व्यक्त करिबा आमे समस्त गोटे गोटे छोट छोट अनुष्ठान सारंकर वार्ता रे सार हमको सब बेले कहंती जे तम पाखरे जो भलो गुण अछि ताको विकसित करो एवं अन्यर भलो गुण को एक्सेप्ट करो तेणु आज आम पाखे पोएम पहुंचला मैडम कर प्रेमदा मैडम कर बरी मैडम बहुत सुंदर काम करती आम शुणी पारिनु जदि बा आम जदि से चैट बॉक्स रे लिखिदेवे से विषय किसी निश्चिंत भाव में जानबू ता छड़ा आम सागरे आज रही सोनू कुमार जे कि जने बिहार जर्नालिस्ट से प्रति थर किसी ना किसी इंटरेक्शन करते एवं से आमर कार्यक्रम को तांकर बिहार जर्नाल रे पेपर रे दियंती एवं समस्त को अवेयर करांती बहुत खूब सुंदर लगे एवं आज आम पाखे पहुंची पारना सलीमा दीदी काश्मीर रो बहुत ठंडा जो नेटवर्क प्रोब्लेम होती से भी मेसेज देते ए सब विषय रे मु केवल अनुरोध करी प्रतिभा मैडम को से ब्रीफ करेंगे परिशेष आम सांगे रश्मि मैडम अच्छा पुलिस लाइन हाई स्कूल पुरी रू रश्मि रेखा सामंतराय मैडम जदि मो कथा शुणी पारुछंती एवं आपनकर जदि किछि पचारिबार अछि इंटरेक्शन करिवार अछि सारक सहित आपण निश्चिंत करि पारंती रश्मि रेखा मैडम ता नहले आमे जीवा आजिर कार्यक्रम को सारिबा पई आज आम सहित समय देथिबा हेतु आम गहन रे उपस्थित रहिथिबा हेतु आमे छोट गोटे स्मारकी सारक पई हमको मन रखिबा पई एवं सारकर आगामी दिन आहुरी कुसुमित हो एवं सार सोशल डेवलपमेंट रे निजको एमती नियोजित करी रखि थांतु एवं आम मान को आगो को आगो जीवा पाई कि सपोर्ट दउ थांतु यहां ही आशा करे आज रे नुआ वर्ष रे पुणी थारे जगन्नाथ पाखे सारंकर भविष्य उज्जवलमय हबो हेई सारीची किंतु से सुस्थ रुहंतु निरामय रुहंतु यही कामना करूची अनुरोध करी प्रतिभा मैडम प्रतिभा महापात्र डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिशनर गाइड तथा ओपीएम गर्ल्स हाई स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रो शिक्षयित्री आनुष्ठानिक भावे धन्यवाद अर्पण करिवे प्रतिभा मैडम यस प्रतिभा मैडम सुनी पारुछंती मैडम सुना जाउची ओके हाँ आपण कथा सुनी पारुछन कोंतु शुभ संध्या समस्त को सर्वप्रथमे नुआ वर्षर अभिनंदन सहित मु ए धन्यवाद कार्यक्रम रो शुभारंभ करूची सर्वप्रथमे मु स्वागत करिबी हमर मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री जगदानंद सार महोदय को एवं धन्यवाद देवी जे सार आज गोटे वर्षर प्रथम दिन रे आसिकी तांकर जो मतामत देइचंती उपदेश देइचंती समस्त को निश्चित भाव में ग्रहणीय मैडम कहते जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट उपरे जो हमर 16टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अछि निश्चित भाव में हमर जीवन सहित अंगांगी भाव में जड़ित वर्तमान आपण देखुथिबे जे हमर विशेष भाव में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे क्लाइमेट एक्शन एवं जीरो हंगर ये सब बहुत कार्य करूची एनवायरनमेंट उपरे हमें कार्य करूचे लिटरेसी उपरे कार्य करूचे ताले निश्चित भाव में सानकर गोटे उपदेश थिला जे हमर जो दुर्बलता रही ताकू हमें आगामी दिन रे ताकू हमें स्ट्रेंथ करबा दरकार जहा द्वारा कि हमें आगामी दिन रे उन्नति पथरे अग्रसर रही परिबा निश्चित भाव में एटा गोटे हृदयस्पर्शी उपदेश सर आपणकर ए उपदेश को निश्चित भाव में हमें ग्रहण करूछु एवं महर्षि कॉलेज तरफ रु मु समस्त तरफ रु आपण को हृदयर सहित धन्यवाद अर्पण करूची धन्यवाद देवी महर्षि महाविद्यालय अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती नलिनी प्रभा महापात्र मैडम महोदय को तांकर उपदेश सब बेले ग्रहणीय छात्र छात्री मानक पई से जो उपदेश दियंती निश्चित भाव में सेटा अन्य मानक
अन्य मानकर हृदय को स्पर्श करिथा सेति पई मैडम आपनकु मध्य आमे कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। धन्यवाद देवी वेबिनार कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नमिता मैडम महोदय को जहांकर अक्लांत परिश्रम पई आज आमे 2137तम जो आमर वेबिनार रही से पहुंची पारिछु। एटा केवल साधारण जिनिस नुहे जनकर अक्लांत परिश्रम फल आज सफल हो पारिछि। सेति पई मैडम आपनकु अंतर आत्मा भीतर मु कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। ता सहित मु पुलिस लाइन पुरी हाई स्कूल रो शिक्षयित्री सामान्य रश्मि मैडम को मध्य धन्यवाद देवी कारण 4-5टा वेबिनार भितर मु मैडम को देखी बहुत सुंदर तांकर कार्यक्रम सेति पई तांको मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। बिहार रो सोनू सर जे सब बेले सक्रिय होई कि ए वेबिनार रे अंश ग्रहण करंती तांको मध्य मु धन्यवाद अर्पण करूछि। ता सहित ए वेबिनार रे विभिन्न राज्य रो संश्लिष्ट होइतबा सदस्य मानकु मु हृदय सहित धन्यवाद अर्पण करबा सहित आमर दिव्यांशु एवं अंशुमान जो मंत्र उच्चारण करिकी गोटे पवित्रता वातावरण सृष्टि करंती वेबिनार रे सेति पई सेमानकु मु कृतज्ञता ज्ञापन करबा सहित धन्यवाद देवी मु मीडिया भाई भौणी मानकु एवं ता सहित ए अनुष्ठान जोटा कि आमर महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ सब बेले सक्रिय होई कि वेबिनार करूछंती तांकर गोटे स्वतंत्र परिचय समाने सृष्टि करि पारिछंती सारा भारत रे। सेति पई मु सेमानंकु हृदय सहित ए वेबिनार टीम तरफ रु मु धन्यवाद अर्पण करूची। एवं ता व्यतीत जो माने भी आमर अन्य माने संश्लिष्ट होई कि रहिछंती तांको मध्य मु धन्यवाद देई मु एठी मोर धन्यवाद पर्व को समाप्त करूची। वंदे उत्कल जननी एवं नववर्षर आउ थरे समस्त को शुभेच्छा जणे मु आपण मानक ठारू विदाय नउची। नमस्कार। थैंक यू वर्तमान अनुरोध करिवे अंशुमान। आर यू देयर अंशुमान? यस मैम ओके वेद पाठ सहित शांति पाठ करी एई कार्यक्रम को समाप्त करंतु। अनम्यूट योर वीडियो। Yes, ma'am. जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवाद अंशुमन। अनेक स्मृति एवं अनुभूति को नहीं आमर 2022 मसीहा चली जाइछि, विदाय नहीं आम ठारू। 2023 मसीहा नुआ वर्ष नुआ सकाळ रे आपण माने समस्ते आज आम पाखरे पहुंची चंती। आपण मानकर समृद्धि सुख एवं अनेक उल्लास जेपरी भरी जाऊ या मोर प्रभु जगन्नाथ ठारे प्रार्थना करी ए कार्यक्रम को एटी सारिबा पई सार ठारू अनुमति भिक्षा करूची। या परे सर आमे गोटे ग्रुप फोटो नबु। सर समस्त को अनुरोध करिवे समस्त टिके अनम्यूट कर दियंतु निजेर वीडियो को, सो दैट विल हैव ए फोटोग्राफ विथ सर। समस्त बंधु मान को अनुरोध समस्त टिके अनम्यूट जल्दी कर दियंतु। अंशुमान स्वीटी समस्त टिके फोटो नै जिवो। साधना मैडम, जगन्नाथ साहू, अनुभव जो समस्त टिके अनम्यूट कर दियंतु वीडियो। संजीव सर, रूप सिंह सर, कलांडी रूप सिंह सर, हाँ वंदिता मैडम, प्रभास सर, भुवन प्रभास सर, धरित्री मैडम, इमर्ती देवी, मधुस्मिता मैडम समस्त टिके ऑन कर दियंतु। हाँ फोटो नबा ग्रुप रे एटा मेमोरी से हम ऑन करंतु। हाँ एटा गोटे बहुत सुंदर मेमोरी आज रो नुआ वर्ष पई। रूप सिंह सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। समस्त टिके आज आमे एते सुंदर कार्यक्रम रे सार को पाइले। मु तो बहुत चेष्टा करे सार को पाइबा पई, कारण सार सब बेले व्यस्त थांती तांकर कार्यक्रम रे किछि ना किछि से करू थांती। 24 आवर्स निजे को से व्यस्त रखंती। ता सत्य मध्य आज
नुआ वर्षर प्रथम दिन रे हमको जो मेसेज देइछन्ते हमको जो स्नेह देइछन्ते हमको जो श्रद्धा देइछन्ते एवं बाटा देखैछन्ते मु अनुरोध करिवि मोर समस्त फ्रेंड्स मान को जो माने वर्चुअली हम सहित अछंती समस्ते एटलिस्ट गोटे गोटे चिंताधारा गोटे गोटे कथा तांकर मन रखिबा एवं कार्य रे परिणत करिबा ताहले आजिर ए वेबिनार टी सफल होईची बोली मु आशा रखिबि पुणी थरे मैडम को धन्यवाद डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र मैडम को एवं हमरो सार समस्त गुरु जगदानंद सर को अशेष अशेष धन्यवाद तांकर असुस्थता मध्य थाई मध्य से आज हम गण रे जोग देइछंती से लागि अनेक धन्यवाद Thank you. थैंक यू सर Thank you. धन्यवाद मैम। थैंक यू नमस्कार नमस्कार समस्त को नमस्कार।